डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 33, जहाँ पे हम देखेंगे एडवर्सेरियल थ्रेट्स इन जनरेटिव एआई। एडवर्सेरियल थ्रेट्स इन जनरेटिव एआई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसमें वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक इज जनरेटिव एआई एज वेल। हाँ, तो यहाँ पे हमें ये देखना है इनडायरेक्टली कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई. Basically, what are the adversarial threats in generative AI? So, it is divided into four parts. The first one is the prompt injection, the second one is the data poisoning, the third one is the evasion attack, and the last one is the model extraction. So, moving on to the next slide. तो जब भी हम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जो होता है हमारा वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेलिशियस कमांड्स जो होते हैं, मेलिशियस कमांड्स उनका रोल होता है। बेसिकली दे आर गोइंग टू हाईजैक द मॉडल लॉजिक। जो भी लॉजिक है मॉडल का, लॉजिक बोले या पैटर्न बोले, उसको हाईजैक करते हैं कौन? मेलिशियस कमांड। ठीक है, तो मेलिशियस कमांड्स आर बीइंग इंजेक्टेड to the model in order to hijack the model's internal detail or the internal architecture or the model logic. So basically these attacks are the hidden attacks, and they can be direct or indirect attack. So prompt injection is basically direct prompt injection or indirect prompt injection. So suppose if we are going to talk about the example of prompt injection, then the example of prompt injection is example ignore previous instruction. सपोज करें इस तरह से कोई कमांड आ गया, इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। हो सकता है इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कमांड हो और उसको वो क्या करे, मॉडल इग्नोर कर दे। ठीक, so this kind of adversarial threats in generative AI is prompt injection. The next one is the data poisoning. So the word itself says that the data is being poisoned, means some irrelevant data or irrelevant data points are being added to the relevant part. Okay, so this is done mostly uh, intentionally at the side of training data set. ट्रेनिंग डेटा सेट में होता है ये मैक्सिमम। ट्रेनिंग डेटा सेट में कुछ मेलिशियस डेटा पॉइंट्स क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, so as to make the normal data as a poisoned data. And why it is being done? In order to correct the fine tuning process. जो फाइन ट्यूनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द गुड रेलिवेंट डेटा पॉइंट्स, उसको करप्ट करने के लिए होता है। ठीक, सो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बैकडोर इन द मॉडल बिहेवियर so that there is a compromise of the safety. तो अगर ऐसा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या होगा, compromises the safety. ठीक है, the next one is the evasion attack. Evasion attack. So in evasion attack there is some kind of modification is being involved at the input end in order to avoid the detection. जैसा कि मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था स्टॉप सिंबल का, कि स्टॉप है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा किया गया सो डैट ये ऐसा लग रहा है कि स्पीड लिमिट 45 है। ठीक, so basically it is going to bypass the content filters. Okay, so it is going to forcing the unsafe or the incorrect outputs. जैसे मान लो एग्जांपल, इट इज गोइंग टू जनरेट restricted content. Example, it is going to generate restricted content. Okay, the next one is the model extraction. So basically here a process of stealing is being involved. So which kind of stealing? Stealing the model architecture or weights. तो आर्किटेक्चर कहें या वेट कहें या जैसे ग्रेडियंट्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनल डिटेल्स ऑफ द मॉडल होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली थिंग्स लाइक आईपी थेफ्ट, ओके, और रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ प्रोसेस आर बीइंग carried out over here. Okay, so what are the impacts and risks if we are going to
talk about this. The impact and risk are like IP theft, safety risk, brand damage, or the compromised system. There are some defense strategies as well, like AI security frameworks, rigorous testing, data sanitization, monitoring, and auditing. So many of these defense strategies I have already covered in my previous lectures. You can go through that. So stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. This is the uh, last part of this today's lecture. Thank you.